So, what's your New Year's plan? All the good and bad that happened this year. Let's do a run from here till the end. No stopping. Okay, wait. Yeah, let's go. Yeah! Yay! All power. Come on, come on, come on. You cannot stop before that line. Lovely. That was nice. See you in 2025. Approximately 10 hours later. Very good morning and wishing you all a very happy new year. Welcome to Nikhil's kitchen. Let's go together. So today what I'm going to do is make a lentil soup along with some Indian pasta kind of thing. This we call in Hindi we call it dal pitha and multiple other things in different languages. I don't know the original recipe. I'm going to prepare my own, which I love. So I'll just show you how to make it, as well as we'll talk about rest of the things throughout the video. First of all, I have these onion and chilies chopped. The good thing about the chilies here is in Germany at least, or I'll say in my student life, since I like the Indian chilies, which are like quite thin, so I freeze them. It's like they are quite hard right now because they are frozen, so I keep them frozen. And tomatoes, onions you'll find in the supermarket as well. You don't have a lot of tumblers or the bowls and stuff, so you can use a flour vase to soak your lentils overnight. So I'll do that. Means I did that yesterday night before sleeping after coming from the party. And now I'll make a dough for the Indian pasta which I was telling, and it will be using some normal wheat flour, nothing special. I'll just add like, oops, I guess I added a little more, but it's fine. Good thing what you can do is you have like flour, add little salt. We use the Indian measure, that is my hand. Salt as per taste. Anyhow, you will put a lot of salt in the soup, so it's fine even if you don't put too much. Also, like for making this, it's up to you, however you like. This mixture can be totally made as per your choice, no worries. It's just like our life. We can mix, add, delete whatever we want, whenever we want, based on our choices. That is Mablock powder, that is garlic powder, we call it Mablock powder. And then I'll add some random stuff like jeera powder. Then I'll add some coriander powder. All the spices from India. Hamdard's red chili powder, just for little spicy taste. And then you go catch masala, it's turmeric, yellow. Little bit of that. And then chicken masala. Yeah, maybe. Again from Hamdard's. I liked it. I don't know how, but whenever I put it in the any kind of vegetable and stuff, or it gets a different aroma. Today I'm going to use MDH amchur as well, a little. I wish you can see at this angle as well, but for that, watch, like, share, subscribe, so that I earn money, then buy more camera and gears and do stuff. Kidding. Yeah, but subscribe if you like. Hing from Aeroplane 555.
means I just get whatever I get and I enjoy that. That's how you should be in your life. Enjoy. Enjoyment is important. And for adding little more enjoyment to the taste of the pasta, what we call it, pita, I don't know, or bati, I'm adding this ajwain. I'm not sure if you can see this. So I just lot of ajwain. Here it goes. I use this salsa dip bottles to store my. This is cumin and these are ajwain. Ajwain is called what in English? Is photoria or something? If you know, comment. If you don't, good. So this can be a very good tutorial class for all the students who are coming up and they want to eat something healthier kind of stuff. If you like that, I'm not sure. So basically, that's my whole picture of the things which I said. Now I'll simply make a dough out of it. Yeah, so preparing the dough. I hope you all had a good year in 2024. More than that, I hope that you achieve a lot of things in this year, and this is the water which I'm going to put. Yeah. So just in the Indian style, I mix it using my hands like this. I know it's yuck for some, but I like it this way. Sorry. Yeah. So where about this? Bye. So the thing is basically start doing things whatever you like, even if you don't like. And now I'm little switching to my desi language, that is Hindi. I enjoy it. तो फिर बस मैं अपने भाइयों और बहनों को और उनकी भी बहनों को और उनके भी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि भाई मस्ती करो, साथ में काम भी कर लो, और मस्ती करते करते काम करो, काम करते करते मस्ती करो, दोनों चीज़ करो। ये चीज़ मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, बट मुझे खुद भी सीखनी है, मैं भी सीखते चलूँगा। अभी तक 2024 में मेरा गोल था कंसिस्टेंट बनना, तो मैं वो बना, जिम रेगुलर जाना चालू हुआ। अब 2025 में गोल है कि अब प्रॉपर बॉडी बनानी है, थोड़ी सी एटलीस्ट, लाइक जो कसर बाकी रही है 24 की, वो 2025 में पूरी करनी है। सो दैट इज़ अ थिंग, एंड उसकी तैयारी आज से ही चालू है। जैसे मैं कल भी गया था दौड़ने के लिए, तो उसकी क्लिप अभी मैं डाल दूँगा। आज मैं जाऊँगा दौड़ने, सो इट्स गोइंग टू बी सेम, हार्ड वर्क करते रहने का। एंड तुम लोग भी करो, अपने अपने हार्ड वर्क बताओ, क्या कर रहे हो, किस चीज़ पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है लाइफ में। जो जर्मनी आने वाले बच्चे हैं उनके लिए, कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि APS ने कुछ कॉलेजेस को बैन कर दिया। दैट वाज क्वाइट अ शॉक। सो एज एन बैन नहीं किया, उस पर कुछ तो उनका प्रोसेस चल रहा है, तो इस न्यूज़ के ऊपर भी फोकस किया जाएगा अभी इन अपकमिंग डेज। मैं इसको अपने एजेंडा में डाल रहा हूँ टू लाइक चेक इट आउट एंड गिव यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि वेयर इट इज़ हैपनिंग, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग एंड स्टफ, why those universities. I guess even there was some famous university in that list. I can share you all like what all universities are in that list, and उसके हिसाब से देख लेना भाई किसका किसका यूनिवर्सिटी है, तो आप प्लानिंग उस हिसाब से कर पाओगे ना। आपको एंड मोमेंट में पता चले भैया सब कुछ प्लान कर लिया जर्मनी के हिसाब से और मुझे APS ही नहीं मिलना, तो ले अब तो वाट लग गई, तो ये नहीं होना चाहिए। That is my overall aim. And yep, 2024 अच्छा रहा। 1000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस किया, इवन 1400 पे आ गए, तो it's like too much. So thank
Thank you so much guys. And we have our dough ready. ना ज़्यादा स्टिकी ना ज़्यादा ड्राई. एंड इसको बस बना के ऐसे बीच में छोड़ देंगे थोड़ी देर. तब तक अपना दाल का प्रेप करते हैं. एंड फिर उसके बाद इसकी बनानी है बाटियाँ अपने को. बाटी इन द सेंस लाइक वी विल पुल लिटिल बिट आउट, जस्ट सिंपली रोल इट एंड पुट दिस लाइक दिस. This is ready. So this is going to be kind of pasta. If you want it in another shape, you can make in another shape. And इसको हम pressure cook करेंगे along with lentils, that is dal, and it will become a lentil soup with the Indian pasta. A little spicy. So I'll just make small balls out of these because I sort of enjoy having these much more than I have normal pasta at my home, so they are also good. They have a different taste, but these are like comfort food. These are like comfort food. So I very recently started to make these, and these become one of my most like comfort foods to have. Plus, it gives you the feel of having like a full chicken soup without actually having a chicken or even a mock meat. I don't like mock meat. As if you count, overall we won't take more than 30 minutes to do all this stuff. And आज तो थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, but otherwise nah. I hope you all who are staying away from their family, please आप कितने भी busy हो, कुछ भी हो, take out the time of 10 minutes, 30 minutes from your busy life and call your parents, because it is very important. You won't understand it right now. भले तुम अभी स्टूडेंट कॉलेज वाले बच्चे हो जो कि एकदम शोशाबाजी में है, मजे में है, या तुम मास्टर्स कर रहे हो, whatsoever, just call them. You have no idea how much they are missing you, because every New Year's you used to be there, who will be like, पापा मम्मी चलो केक लेके आए, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा and stuff. And this time, or from the last how many times I don't know, you are not there. So कॉल तो कर लो यार, इतना तो बनता है. ठीक है, they are not asking you for anything, they are asking you for the most basic element and the most important one, that is your time. So उतना दे दो, बाकी तो ठीक है. बाकी आप होशियार, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है उतनी. हाँ चलिए, इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन हो गया है पूरा. तो अब ये देखिए बाटियाँ तैयार, प्याज मिर्ची तैयार, Indian pasta, onions and chili. Now I will use this lentils to make the soup kind of thing. I'll just go as per my way, however I need to do it. I don't have a specific recipe. Okay, you add this much of this one. Just enjoy, bro. People take life too seriously. You should, but इतना भी नहीं भाई कि लाइफ में मजा नहीं है. Just enjoy. आज है नहीं है, ये है वो है, जो भी है मौज करने का मौज. Using this induction wala cooker, so if you're coming to Germany, get induction wala cooker from India. It will be much cheaper compared to what you will buy in India. Plus it's good. ये 3 लीटर का कुकर है from United. Buy anyone. Suggestion and advice: look for the one with the safety wall, so that in case if by mistake आपसे भूल चूक हो जाए कुछ, and
कुकर में लाइक प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया है व्हाटसोएवर, so because of that if the cooker blast or something you are safe, so that वो वॉल्व फट जाता है and आपको कुछ नहीं होगा. So that is very important thing. So that's a very small suggestion from me to all my upcoming friends in Germany or even anywhere. So whenever you are buying a cooker these days, at least try to have that kind of stuff. So I'm using this sunflower oil. कोई भी ऑयल यूज़ करो, ज़्यादा लोड नहीं लेने का. But yeah, in Germany you have this very nice Nutri-Score labeling in couple of brands. So in those brands they say simply that okay, we are not that good of a quality, we are C. If you get A, it's very nice quality. If you get E, that's worse. So in the items in which it is available, use it. If not, again fine, we are desi bhai, desi. So we can handle it, no worries. So and you have to have a lot of jugam, so I don't know. Oh, this was from a water filter. So it was the box. I use it now as my खड़े मसाले का डब्बा, because हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. using some लौंग, एक तेज पत्ता डालना, आधा डालना. तेज पत्ता बहुत है, तेज पत्ते की कभी नहीं है, कभी है तो बस प्यार की. या इसमें अब तुम जीरा वीरा डाल सकते हो, पूरा मस्त एकदम. तो इसमें जीरा डालो, हमारे यहाँ बढ़िया वाले. जीरा डाल के एंड मैं डालता हूँ हिंग. ऐसे देखते हैं बट उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा. अरे बाबा, अभी मेरे पास वो वाला ट्राइपॉड भी नहीं है, तो कोई नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं. आज मेरी शक्ल देख लो एंड मैं बताते रहूँगा यहाँ पे क्या हल चल रहा है बीच बीच में ऐसे करके. I'll show it to you what's going inside, and most probably I'll just put this video as such. I won't waste too much time on editing, because what I have understood, what I have felt is I waste a lot of time and my thinking ability to just think that भाई editing कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा. Screw it. I'm going in as real as I am, and it's okay if people judge me or whatever. प्याज भी डाल दिया. So if you live in house, मस्त ऐसे बनाओ. और मज़े की चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे वो अपने इंडियन कॉलोनीज वाली फील आएगी. क्यों? आप कहीं जा रहे होगे और आपको अचानक से एक जगह से भिंडी के भुजिया की खुशबू आ रही है, और तो भिंडी भी बहुत महंगा है यहाँ पे. फिर आपको अचानक से कहीं से खुशबू आ रही होगी चिकन बनने की, कहीं पे दाल में तड़का पड़ रहा होगा, ओहो हो. और कई बार दूसरे कंट्रीज़ के जो खाने होते हैं उनकी भी खुशबू आती है. तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. टमाटर लेते हैं, ये देखो, टमाटर बड़े मज़ेदार ऐसे मिलते हैं टमाटर. ठीक है, टमाटोस, हाफ टमाटोस. आप सुन के फील कर पा रहे हो क्या हो रहा है. क्योंकि ये क्विक रेसिपी बनानी थी एंड बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है. डाल लो, घुमाओ एंड डाल दो, बिंदास. पानी वानी डाल सकते हो काफ़ी अच्छे से, जस्ट टू कीप इट सूपी. एनी हाउ यू वांट टू हैव अ सूप, नॉट लाइक दाल हेवी वाला गाढ़ा वाला. सो just like that, it's little soupy. Then actually put a little more water
Based on that, you adjust the salt and stuff. Simple. So you put more water, keep it like this, increase the heat so that it boils, and just to give it an Indian taste, along with those tikkas, what I will put, I'll keep this one softer. Why? Because I want to sip it. So not very heavy. Again going with my Jugadu masala dabba. First of all, haldi. थोड़ा थोड़ा मतलब 1 टेबल स्पून टाइप डाल दो ज़्यादा नहीं. मिर्ची भी सेम 1 टेबल स्पून. मैं अब आजकल पैकेट से ही डाल लेता हूँ. डालते डालते प्रो हो जाओगे. चिकन मसाला नहीं डालना. हल्दी मिर्ची धनिया MDH मिर्ची धनिया हल्दी. MDH याद रखो, लाइफ अच्छी चलेगी. कोई सब्जी बना रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या डालना है क्या नहीं डालूँ, क्या डालूँ, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, MDH चिपकाओ. थोड़ी स्पाइसी चाहिए, चिकन मसाला चिपका दो दाल के हिसाब से. नमक डाल दिया, इसको घुमा लेते हैं. ये सूप एक्स्ट्रा भी बन जाएगा तो ये लोड नहीं है तुम्हारे पास. तुम बाद में गर्म करके पी सकते हो इसको. ये बढ़िया 9-10 गट्टे अपने तैयार हैं. After adding spices, लग रहा है बढ़िया. अब कुछ नहीं करना क्योंकि और जल्दी जल्दी करना है. तो जय माता दी इनको ऐसे डिप कर देते हैं. चलो भाई घुसते जाओ घुसते जाओ. ये सभी भाइयों ने छलांग मारी. बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं बीच में वो. पुट ऑन कुकर लिड. वेट फॉर मस्ट 5-6 सीटी क्योंकि वो आटा है गोली गोली बना हुआ. तो गोली बेटा मस्ती नहीं, वो पक जाएगा तो हमारी डिश रेडी. एंड दैट्स हाउ वी डू इट. रही बाकी बातें, सिंपल है. थीसिस के ऊपर काम करना है मेरे को. एंड यूट्यूब देखना है ऐसे ही चलाऊँगा विद लव as well as while taking care of all the people who ask me for any kind of help. Apart from it, eating healthy, eating clean, at least try to do that even if you can't. And helping people, giving back to the society as much as you can. And yes, live a happy life, live a healthy life. That's what all I pray for you, pray for myself, and let's hope this will be a good year. If you're doing anything good, please share with us, share with everyone so that we all can enjoy that feeling. Also, I'm on that mission of 1000 to 30. So for that mission, we will be talking a lot ahead. I'm still stabilizing myself. I guess I'm in that first 100 days till now. And my first video will be out most probably on the 100th day for that particular project. Let's see how it goes. और ये अपना सूप तैयार. निखिल यार ये तो दाल और उसके साथ में वो आटा वाला जो गोली है, that is the pasta along with the lentil soup is ready. Now what you can do is you can use this kind of spatula and just smash it a little bit. Just crush the lentil pieces a little so that it attains a texture of soup. If you want, you can add ghee or butter. That will also give you a different kind of flavor. So I'm thinking to add some ghee. Ghee को देखे मस्त ऐसे करके डुबा. 1 घी का चम्मच दाल में गया छपाक. इसके ऊपर से आपको चाट मसाला वसाला डालना हो, इसको फैंसी स्टफ में करना हो, the floor is open, choice is yours. Even if you want to put, I guess, other vegetables to make this stew kind of thing, feel free. कसूरी मेथी डालना हो, कड़ी पत्ता डालना हो, दाल कोई और यूज़ करनी हो,
मूंग की दाल यूज़ करनी हो, चने की दाल यूज़ करनी हो, कोई भी दाल यूज़ करो। मेन गोल वॉज प्रोटीन हो गया, थोड़े से कार्ब्स हो गए, अच्छा फैट हो गया एंड बढ़िया जुगाड़। लाइक इट्स लाइक अ मील प्रेप, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स एज वेल एज इट इज टेस्टी। एक तीर से दो निशाने, आपको टेस्टी खाना भी खाने को मिल रहा है एंड हेल्दी भी। एंड सर्दियों में दोस्तों खाने का मजा ही कुछ और है। रीज़न बिहाइंड सूपी है, मज़ा आ जाता है। अब आया ना स्वाद। So you can also enjoy this one pot soupy pasta वाला दाल एंड इसका टेक्सचर I'll just show कैसे करके कट सकता है and then it comes like this. It tastes like chicken, honestly speaking. Let me try. Very tasty. So on a winter day, eat something like this, you will love it. Now, just the way I told you, go and talk with your parents, with your family, with your friends. Just do that. I'm going to do the same. And I wish you again a very, very happy new year. I hope and pray we all will achieve all the success we want, all the love we want, and all the money we want. Everything, basically. See you. And if you like the content, like, share, subscribe. We'll keep on doing much more of these things. And see you soon. Take care. Bye bye.